Hello everyone, I hope you are understanding whatever we are discussing under the chapter lesson 8 organic chemistry. Right, so far we have discussed many things like unique properties of organic compounds, their classification, isomerism, IUPAC naming, and different properties also, and some uses, industrial uses, and some sources from where do we find these organic compounds. Now the next topic is chemical properties of methane. This is methane, 1 carbon, methane, 2 carbon, this is an H4. So this is ethene and this is ethyne. So what we will discuss today, we will discuss some properties of chemical properties, not the physical one, the chemical one of methane, ethene and ethyne. But before I start, one thing I would like to mention out here that I miss you all a lot. I just wish this time to pass very soon, the schools to open, and once again you are there with me, and so that we can continue our classes normally. Love you all, take care. Now coming to the chemical properties, the first one that we will discuss today is methane. For methane, in your book there are two chemical properties which are given. One is combustion and the second one is substitution. Combustion, what do you mean by combustion? When a substance burns in presence of oxygen, that is called as what? Combustion. And substitution, the name itself is saying that it's a substitution reaction, that maybe another element takes the place of other element in a compound, right? Now substitute karna, clear? This substitution reaction is the characteristic, it is the characteristic property, chemical property, characteristic chemical property of alkane family, property of alkane family. This you have to remember. If by chance a question comes that give one characteristic chemical property of alkane family, then what will you write? The substitution reaction is the characteristic chemical property of alkane family, and then the particular reaction that we will discuss, that you will mention. Clear? So the first thing, combustion. Combustion means what? Combustion means burning in presence of oxygen, right? So methane burns in presence of oxygen to give out carbon dioxide and water, like most of the fuels that burn and give out what? Carbon dioxide and water, right? So if we write the reaction, the first one, 1.1 means what? Methane, first property is what? Combustion. So for combustion, methane, it reacts with oxygen, good supply of oxygen, then what happens? It gives out carbon dioxide plus water, and enormous amount of heat is liberated. That is why methane is used as a fuel, right? Now let us balance it. Carbon 1, hydrogen 4, hydrogen 2 here, oxygen 2 2s are 4, 2 2 4, very good. So it is balanced now. So what is the first property that we have discussed? The first property that we have discussed is the combustion. Combustion means in burning in presence of oxygen, and what does it gives out? It gives out carbon dioxide, water and enormous amount of heat. Now these hydrocarbons, these saturated, why they are saturated? Because it's a methane and it belongs to the family of which group? It belongs to alkane. So that is why it is saturated hydrocarbon. So saturated hydrocarbons usually burn as a neat fuel. They do not give out soot, kala kala धुआं जो सब होता है, right? Rather you will find it gives out a nice blue flame. The heat produced during this combustion is utilized in the industry and as well as in the homes,
as a source of heat energy, and this is the fuel that is also used in the transport sector. Why it is used? Because on burning it gives out enormous amount of heat, and second, it is a clean fuel. It does not give out sooty flame. Now the next thing that we will discuss, which is the unique characteristic property, that is substitution reaction. Substitution reaction of methane. This is a unique property of the group alkane. Substitution मतलब एक की जगह हटा के दूसरा एलिमेंट सब्सटेंस एटम आता रहेगा, ठीक है. नाउ व्हाट आर वी डूइंग? वी आर टॉकिंग अबाउट मीथेन. व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ मीथेन? मीथेन इज CH4. सो दिस इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, this hydrogen is substituted by some halogens, like suppose we take chlorine, bromine or iodine. Suppose we are taking chlorine. तो जब तक ये पूरा का पूरा हाइड्रोजन रिप्लेस सब्स्टिट्यूट नहीं हो जाता, लाइक इफ आई एम एब्सेंट इन माई प्लेस सम अदर टीचर विल कम, राइट, दैट इज कॉल्ड व्हाट? सब्स्टिट्यूट. सो सिमिलरली एक हाइड्रोजन हटा, एक क्लोरीन आया, एक और हाइड्रोजन हटा, एक और क्लोरीन आया, और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? जब तक ये पूरा का पूरा हाइड्रोजन हट के क्लोरीन उसकी जगह नहीं ले लेता, तब तक ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलता रहता है. क्लियर? दिस इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर. सो नाउ लेट अस स्टार्ट. And again, this particular reaction takes place at a very high temperature of around 250 to 400 degrees Celsius, and it needs sunlight or UV light. Sunlight या UV light के अंदर ही ये reaction take place करता है, right? UV. So until and unless this methane completely changes into CCl4, this is called as carbon tetrachloride. जब तक ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये रिएक्शन क्या होता है? चलता ही रहता है. एंड व्हाट इज द कंडीशन दैट इट रिक्वायर्स? इट रिक्वायर्स सनलाइट और यूवी लाइट एंड एट अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 250 to 400 डिग्री सेल्सियस. दो क्लोरीन है, सबसे पहले दो इस तरह से है ना हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन हट जाता है यहाँ से क्लोरीन के दो आयन से, एक आके अटैच होगा और एक हाइड्रोजन के साथ बन जाएगा. तो ये क्या बन गया? CH3Cl plus HCl. So what is the product? The first product that we get is chloromethane. Chloromethane. And this is what? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो सकता है. कब स्टॉप होगा? इफ अ क्वेश्चन कम्स, इफ द प्रोडक्ट वी वांट इंस्टेड ऑफ कार्बन tetrachloride, if we want the reaction to stop at chloromethane, then what is the condition? The condition is only one condition, that we put excess amount of methane. अगर हम excess amount of methane दे देंगे तो ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा. लेकिन अगर इक्वल क्वांटिटी है तो ये स्टॉप नहीं होगा, ये चलता रहेगा. ठीक है. नाउ अब क्या होगा? सेकेंड स्टेप, क्लोरोमीथेन, यहाँ पे क्या है? सनलाइट, व्हाट इज द कंडीशन? एंड 250 to 400 डिग्री सेल्सियस, राइट. क्लोरोमीथेन CCl3 प्लस अगेन क्लोरीन, सेम कंडीशंस. अब क्या होगा? फिर से यहाँ पे क्या है? Cl H प्लस Cl2. तो यहाँ से क्या होगा? दो आयन्स निकलेंगे क्लोरीन के, एक हटेगा, एक क्लोरीन इधर आ जाएगा और ये जो हाइड्रोजन हटा ये इस क्लोरीन के साथ अटैच हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या हो गया? अभी दो क्लोरीन आ गए और दो ही हाइड्रोजन रह गए. सो इट विल फॉर्म CH2Cl2 विच इज Cl2. अब दो है तो इसका नाम क्या हो जाएगा?
डाइक्लोरोमीथेन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर? नाउ ये रिएक्शन फिर वहाँ स्टॉप नहीं होगा। कैसे स्टॉप होगा? इफ वी ऐड एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरोमीथेन, अगर नहीं दिया फिर दोबारा चलेगा, थर्ड स्टेप आएगा। थर्ड स्टेप में क्या आएगा? डाइक्लोरोमीथेन। सो वी विल टेक डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 प्लस क्लोरीन। सिमिलरली दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हटेगा, क्लोरीन के साथ अटैच होगा, और क्लोरीन दो है ना, राइट? एक इसके साथ अटैच हो गया और एक इस प्लेस पे आ जाएगा, तो क्या बनेगा आपका? CH, एक हाइड्रोजन रह गया, CHCl3। दिस इज व्हाट? दिस इज क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म plus hydrochloric acid. So this will form chloroform and hydrochloric acid. अब एक और सब्स्टिट्यूशन, एक और हाइड्रोजन बचा है, इसको भी रिप्लेस करना है। सो वी विल टेक क्लोरोफॉर्म प्लस क्लोरीन। देन ये जो हाइड्रोजन है ये क्लोरीन के एक आयन के साथ अटैच हो जाएगा और क्लोरीन का एक आयन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? CCl4 plus hydrochloric acid, and this particular compound, the final product that we get is called as carbon tetrachloride. So what is the final product of the substitution reaction? We started with methane and we get what? Carbon tetrachloride. And what is the condition required? Sunlight or UV light, and the temperature should be around 250 degrees Celsius to 400 degrees Celsius. So two properties of methane. One is combustion, burning in presence of oxygen to give you carbon dioxide, water and enormous amount of heat. And the second one is the substitution reaction of methane. अब हमारे को कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं चाहिए, सपोज हमें क्लोरोमीथेन चाहिए, तो हम ये तीन स्टेप कैसे रोक सकते हैं? इफ वी गिव एक्सेस अमाउंट ऑफ मीथेन इन द फर्स्ट रिएक्शन. Am I clear? So please make a note of this and then we will proceed to the second, ethene. Now the next member is what? Ethene, right? It belongs to the family of alkenes. So second member, ethene. In your syllabus, two reactions are again given for ethene. One is addition reaction. Addition means what? Add hona, right? And the second one is polymerization. Polymerization is what? When a single unit, right, single monomer unit, and it forms a long chain of that particular single unit, that reaction is called as what? Polymerization. Poly means बहुत सारा, तो एक मोनोमर यूनिट का, एक बड़ा मॉलिक्यूलर वेट के मोनोमर यूनिट का अगर छोटा छोटा लेस वेट का मॉलिक्यूलर यूनिट्स का लंबा चेन बन जाता है, that is called as what? Polymerization reaction. And again, in addition reaction, there are two types that are given in your course book. One is the addition of hydrogen and one is the addition of bromine. ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अंडर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथीन देयर आर टू रिएक्शंस दैट इज डिस्कस्ड इन योर पर्टिकुलर सिलेबस. वन इज द एडिशन रिएक्शन. One addition is of hydrogen and another addition reaction of bromine, and after that it is what? Polymerization reaction. So now again 2.1. Why I am writing this one? क्योंकि addition reaction दो है, तो इसीलिए addition of hydrogen. एडिशन मतलब ऐड होना, x प्लस वाई क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, राइट? सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू इथीन. One thing you have to remember for unsaturated hydrocarbons,
अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। ये आपको हमेशा याद रखना है दिमाग में रिएक्शंस के केस में। सैचुरेटेड में ये नहीं दिखाई देता, बट इट्स अ यूनिक प्रॉपर्टी। अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अगर ट्रिपल है तो ट्रिपल पहले डबल में कन्वर्ट होगा और फिर वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का ये बेसिक प्रॉपर्टी है जो रिएक्शंस में देखने को मिलेगा। क्लियर? इस चीज़ को आप हमेशा याद रखेंगे कि अगर डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड टूटता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और फिर कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट या चेन बनेगा। क्लियर? तो डबल बॉन्ड ऑलवेज, द डबल बॉन्ड ऑलवेज गेट कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, एंड इफ इट इज अ ट्रिपल बॉन्ड देन ट्रिपल बॉन्ड विल फर्स्ट कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड एंड देन द फाइनल विल बी ऑफ अ सिंगल बॉन्ड। तो यानी कि अगर यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है इथीन में तो डबल बॉन्ड है, तो मतलब उसका डबल बॉन्ड टूटेगा। तो डबल बॉन्ड अगर टूटा तो वो क्या बन जाएगा? इथेन बन जाएगा और हाइड्रोजन उसमें ऐड होगा, राइट। एंड दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें बहुत सारा अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होता है। नाउ लुक एट दिस रिएक्शन, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा? डबल बॉन्ड है। अब इसको हम कैसे दिखाएंगे? इथीन क्या है? C2H4। इसको बॉन्ड के शेप में अगर दिखाना है, स्ट्रक्चर 2, तो मैंने क्या बोला? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में टूटता है, तो प्लस हाइड्रोजन 2, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? सिंगल बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन है ना, तो एक हाइड्रोजन इधर आके अटैच हो जाता है, H3H3। तो ये क्या बन गया? इथीन में अगर हाइड्रोजन ऐड किया हमने, सो व्हाट इज आवर फाइनल प्रोडक्ट दैट वी गेट? द फाइनल प्रोडक्ट दैट वी गेट इज व्हाट? इथेन, C2H6। क्लियर? नाउ ये होता कैसे है देखो। अगेन this particular reaction takes place under a catalyst. Nickel is the catalyst, right? And the temperature is 160 डिग्री सेल्सियस। तो निकल हमारे को डालना पड़ेगा। तो क्या हो जाता है? ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मतलब क्या है? इसके 2 इलेक्ट्रॉन और इसके 2 इलेक्ट्रॉन ने आपस में शेयरिंग किया है ना? इस तरह से है। जब कैटलिस्ट एक्ट करता है तो ये बॉन्ड क्या हो गया? टूट गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? फ्री हो गया। यहाँ पे फोकस करो, ध्यान से देखो। डबल बॉन्ड था, हाइड्रोजन है, निकल के एक्शन से क्या हुआ? बॉन्ड डिसॉल्व हो गया, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। यहाँ पे 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, राइट? एक इलेक्ट्रॉन। तो ये लोग क्या करते हैं? एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा। तो इस साइड पे क्या हो गया? CH3 और इस साइड पे क्या हो गया? CH3। और कितना बॉन्ड रह गया? It's only single bond that is left. Am I clear? So when a mixture of ethene and hydrogen gas is passed over nickel catalyst at a temperature of 160 degrees Celsius, one molecule of hydrogen is added. Why we are saying one molecule? Because hydrogen single नहीं रह सकता है. Hydrogen is a gas, so it forms one molecule as H2. So one molecule of hydrogen attaches to the dissolved part of the single bond. Clear? And it forms what? It gets converted into ethane. It gets converted into ethane. Now, this was the addition reaction of hydrogen. Clear? Now we will discuss what is the second thing that is given in your course book. 2. Addition of bromine to C2H4. क्या बोला था मैंने? C2H4 is what? It is ethene. इथीन डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड डिसॉल्व होके किस में कन्वर्ट होगा? सैचुरेटेड, राइट? सो नाउ व्हाट इज बीइंग एडेड? C डबल बॉन्ड H2H2.
This reaction is completely or just like the hydrogen part, but there is one unique and characteristic feature that I will tell you right now. Okay, so look here, plus bromine. Color of bromine is something deep reddish brown. Okay, क्या होगा? वेरी गुड, आई नो यू हैव अंडरस्टूड. ये जो बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड का मतलब क्या है? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन. डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? डिसॉल्व अगेन, एंड द टेम्परेचर दिस. क्लियर? ये डिसॉल्व हो गया, तो ब्रोमीन से यहाँ पे 2 आयॉन्स, एक यहाँ और एक यहाँ अटैच हो जाएंगे. क्लियर? तो ये क्या बन जाएगा? और ये कितना बॉन्ड रह गया? सिंगल. यहाँ पे कितना है? H2. जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं वहाँ पे क्या अटैच हो रहा है? ब्रोमीन. अब इसका IUPAC नेमिंग करो तो ब्रोमो कितना है? ब्रोमो कितने ब्रोमो हैं? 2. तो डाई ब्रोमो कितना? 2 कार्बन. इथेन, सिंगल बॉन्ड, सो इथेन. अब पोजीशन बताओ, चाहे तो 1 यहाँ लिखो, 2 यहाँ लिखो, या 1 यहाँ लिखो, 2 यहाँ लिखो. इन बोथ द केसेस इट विल बी व्हाट? सेम. सो लेट इट बी 1 2. सो पोजीशन लिखो, पहले 1 का लिखा जाएगा, 1 2 डाइब्रोमो इथेन. एंड व्हाट इज द कलर ऑफ डाइब्रोमो इथेन? जो ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, इसका कलर क्या है? इसका कलर होता है लाइट येलो. This reaction, this addition reaction of bromine to ethene is very important. Why? Because ये test है. It is a test to deduct whether the hydrocarbon contains double bond or not. So, test to deduct double bond of hydrocarbons. Now a question can come, simple तो आएगा नहीं, right? It will be a twisted one. So the question can come, sample A is given. Now you have to identify whether the sample A is a alkene or alkyne, right? सैम्पल ए दिया हुआ है, सपोज ये सैम्पल ए है. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट वेदर दिस इज एन एल्कीन और एल्काइन. सो व्हाट इज द टेस्ट? सो यू विल राइट, वी कैन आइडेंटिफाई द गिवन सैम्पल इज एल्केन और एल्कीन और एल्काइन विद द हेल्प ऑफ एडिशन test of bromine to the sample, right? With the bromine test. तो क्या करेंगे? We will take sample A and we will add the reddish brown bromine to it. If the reddish brown bromine color changes to light yellow, अगर वो light yellow हो जाता है, ब्रोमीन में अगर हम इथीन गैस पास करें और उसका reddish brown color light yellow हो जाता है, then what does it indicate? That the given sample is your ethene. The given sample is your ethene. That means उसमें क्या है? double bond है. So this particular reaction is very important because it is the test to deduct the double bond of hydrocarbon. Please make a note of this, and then I will move on to polymerization. So next reaction that is given in your book is of polymerization. 2.2 polymerization. Polymerization, like polythene bags that we make, when ethene, the single unit is attached, the ethene, उसको तोड़ेंगे किसमें? इथेन, और उसका लॉन्ग चेन बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा?
polythene, right? And that particular process is called as what? Polymerization. Clear? Saturated, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है इथीन, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड क्या हो जाता है, सिंगल में टूटेगा तो सैचुरेटेड बनेगा। तो इथीन का अगर हमने मोनोमर यूनिट लिया, मोनोमर यूनिट मीन्स सिंगल यूनिट, और उस सिंगल यूनिट को अगर उसका सैचुरेशन तोड़ दिया, अनसैचुरेटेड करके उसे सैचुरेटेड में कन्वर्ट किया और फिर इथीन से इथेन बन गया और उसका लॉन्ग चेन बना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? पॉलीमराइजेशन। Two or more molecules of a simple alkene unit unite with one another under suitable conditions to form a new compound. The molecular union of such molecules is called what? Polymerization. Please underline, this is the definition of polymerization. तो क्या बोल रहे हैं? Two or more molecules of simple alkene, alkene group इथीन लिया, सपोज इथीन लिया, ठीक है, उसका 2 या 3 या जो भी ग्रुप लिया हमने और उसको कन्वर्ट कर दिया और वो यूनाइट कर गया टू लॉन्ग चेन्स ऑफ इट्स इथीन ग्रुप, राइट? इथीन फॉर्मूला C2H6 लॉन्ग चेन, क्लियर? इस तरह से बन जाएगा n number. So this particular process is called as what? This is called as polymerization. So if I have to write, so single monomer unit polymerization, and it gets converted into polymer, uska long chain. Again I'll explain the definition. Two or more molecules of simple alkene unite with one another under suitable conditions you have to provide to form a new compound. The new compound that is formed, such molecular union is called as what? Polymerization. So polymers are what? High molecular weight compounds which are made to a large number of simple chain. एक बड़ा heavy लिया मॉलिक्यूलर वेट, उसको सूटेबल कंडीशंस प्रोवाइड किया और वो लाइट वेट लॉन्ग चेन बन गया, इसको क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। नाउ एग्जाम्पल, दिस वन ओनली, वी आर टेकिंग द इथीन, n यूनिट मीन्स कितना भी, and what is the special condition? The special condition is that we provide a temperature of 200 degrees Celsius and peroxide as a catalyst, peroxide as a catalyst, and also we provide high pressure. High pressure देना पड़ेगा तभी bond टूटेगा. So if we provide high pressure, then this ethene will change into ethane. CH2, CH2, long chain will be formed, n number. Clear? So this particular reaction is called as what? Polymerization. And this is the way how we make the polythene. The most common term that is also used for this polymers is polythene. Polythene बोलते हैं ना, that one. And again, peroxide, in place of peroxide we can use another catalyst which is Ziegler catalyst. Why do we add this Ziegler catalyst? Because this temperature is too high. So if we have to lower down the temperature, then instead of peroxide we use Ziegler catalyst, right? So what do we add? Ziegler catalyst to reduce the temperature of the reaction. Now please make a note of this polymerization, and then we will move on to the third section. Now the next and the last one is what? This is what? Ethyne.
It belongs to the homologous family alkyne, right? What did I told you previously also, that if it is an unsaturated triple bond, it will get converted into double bond, and then finally it will get converted into a saturated hydrocarbon. So this is the basis of the reaction. And in your book for ethyne, only one reaction is given, that is addition reaction, one with hydrogen and the another one is with bromine, right? But I will explain you one more combustion. So एडिशन बिल्कुल इथीन के जैसे है, बट फर्क कहाँ पे है? इथीन यहाँ से शुरू हुआ था, डबल से सिंगल, और इथाइन कहाँ से शुरू होगा? ट्रिपल से डबल, डबल से फिर सिंगल, सिर्फ इतना ही फर्क है, बाकी एडिशन सेम है. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एक्सक्यूज मी ब्रोमीन. And the second one we will discuss is the combustion. Combustion is just like your methane one. It will give carbon dioxide, water and enormous amount of heat. So this is third. Excuse me. 1. Addition of hydrogen to ethyne, right? ट्रिपल बॉन्ड है, एक एक हाइड्रोजन प्लस क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन. देन द स्पेशल कंडीशन, निकल एज अ कैटलिस्ट एंड द टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस. क्या हो जाएगा? यस, यहाँ से एक बॉन्ड, ये जो है एक बॉन्ड डिसॉल्व होगा, 2 आयन्स फ्री, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आके अटैच हो जाएंगे. सो व्हाट इज द प्रोडक्ट दैट यू विल गेट? C डबल बॉन्ड H2 H2. ये था क्या? इथाइन, एसिटिलीन, राइट? ये क्या बन गया? इथीन, इथाइलीन. डबल बॉन्ड हो गया. अब इसमें हम दोबारा हाइड्रोजन ऐड करेंगे, निकल कैटलिस्ट, 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे. अब इधर क्या होगा? डबल बॉन्ड डिसॉल्व, एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री, यहाँ से 2 है, एक इधर एक इधर, तो क्या हो गया? C H3 H3. This is the way you can write down. So it has finally become what? Ethane. Either you can write like this, or you can, this is a compound structure, and or you can write it like this manner, branch structure. In your book it is given in the branch method. So या तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं. इसको भी सिमिलरली ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, क्लियर? इन योर बुक देयर इज अ प्रिंटिंग एरर. जो इथीन दिया है उसमें 1 हाइड्रोजन इज मिसिंग, वहाँ पे इस जगह पे एक हाइड्रोजन मिसिंग है, यहाँ पे ऐड कर दो एक H. ठीक है. नाउ so this is the addition reaction of what? Hydrogen. Now addition of bromine to ethyne. Same यही प्रोसीजर होगा, ट्रिपल, डबल, डबल टू सिंगल. लिखते हैं ट्रिपल H plus bromine, and the special condition again, like what is added? Carbon tetrachloride. Okay, so what do we add? We add carbon tetrachloride, which is again act as a catalyst. क्या होगा?
ट्रिपल बॉन्ड डिसॉल्व होगा, दो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री, ब्रोमीन अटैच हो गया, तो C डबल बॉन्ड C, H Br H, और यहाँ से एक जो फ्री हुआ Br। तो ये क्या था, ये है आपका इथीन, सॉरी दिस इज इथाइल, दिस इज योर ब्रोमीन विच इज रेडिश ब्राउन इन कलर। यहाँ पे ये क्या बन गया, नेमिंग करो, 1 2 पोजीशन 1 2, यस डाई ब्रोमो, दो कार्बन है तो इथ, डबल बॉन्ड है तो इन, इथीन, 1 2 डाई ब्रोमो इथीन, क्या बन जाएगा 1 2 डाई ब्रोमो इथीन। इसका कलर क्या होता है, लाइट येलो, याद आया कुछ, राइट। नाउ इसमें हम दोबारा ब्रोमीन ऐड करते हैं एंड अगेन कार्बन टेट्राक्लोराइड, इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। अब ये डबल बॉन्ड किस में टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड में, एंड व्हाट इज द कंपाउंड दैट विल फॉर्म, ये डबल बॉन्ड डिसॉल्व होगा, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ब्रोमीन विल गो एंड अटैच टू दैट साइड, सिंगल हाइड्रोजन 1 1 1 1, क्या अटैच हो गया, ब्रोमीन ब्रोमीन। So what is the name, 1 1 2 2, right, 1 1 2 2, कितने हैं ब्रोमीन, 4, so टेट्रा ब्रोमो ब्रोमो इथेन, this is colorless. Now this reaction is also very important. Why this reaction is also very important? Because again it is the test analysis for alkynes. अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि एक सैंपल है, उसको पता करो कि वो डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, वेदर इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ एल्कीन और एल्काइन, तो हम कैसे पता करेंगे, वी विल ऐड ब्रोमीन टू इट एंड इफ द कलर चेंजेस टू लाइट येलो, दैट मीन्स व्हाट इट इज एल्कीन फैमिली, ठीक है, इथीन। And if the reddish brown color of the bromine solution changes to colorless solution, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि वो एल्काइन फैमिली है, जो हमने कंपाउंड या सैंपल लिया है वो क्या है, वो एल्काइन फैमिली का है। सो एल्काइन फैमिली गिव्स colorless 1 1 2 2 tetrabromoethane compound when it reacts with bromine। तो अगर इन है, डबल बॉन्ड है, तो लाइट कलर हो जाएगा, लाइट येलो फ्रॉम रेडिश ब्राउन, और अगर वो कंप्लीटली कलरलेस हो गया है, दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू द एल्काइन फैमिली। सो दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज ऑल्सो very important. Please make a note of this. This is the test to check for the alkyne homologous family, to check for the triple bond. Now we will move on to the next combustion. Combustion is again what? Burning in presence of oxygen. Although this is not mentioned in your book, but it is again important reaction, so write down. So H2, it combines, burns with enormous supply of oxygen. So what is the product that we will get? We will get carbon dioxide plus water and enormous amount of heat is liberated. That is why this ethine or acetylene is also used as a inflammable material, as a combustion material, right? So what is the common name? Acetylene. And what is the IUPAC name? Ethine, right? It combines with oxygen or burns in presence of oxygen to give carbon dioxide, water, and enormous amount of heat energy is liberated. Alright, make a note of this and then we will switch on to our next topic, synthetic polymer.
Okay, so the next topic, point number 10, synthetic polymer. Now in this modern age is also called as plastic age, and the reason very well you know why do we call it a plastic age, because wherever you look around you will find different versions of plastic elements, right? Now this plastic is a compound that is derived from unsaturated hydrocarbons. So like we have discussed under polymerization, so what happens, this heavy molecular weight of a single monomer unit, right, it is converted under the reaction of polymerization into long chain of lightweight molecular compounds, and these can form long chains. So this particular property, it was developed to produce the plastics, polythenes, right? Now the word poly means what? In your mathematics you also study polynomials. Poly means what? Many, and mer means what? Unit. So many units. So from a single monomer heavy weight, molecular weight unit, we can make many lighter weight units, and they can form a very long chain. This process is called as what? Polymerization. So the modern age is often termed as plastic age. If we look around, we can see wide range of materials. Some of them are naturally obtained, like from jute, cotton, cellulose, and some are what? Artificially made, like polythenes, PVC. They all belong to a particular class of compounds which are called as what? Polymers. So the word poly means many and mer means what? Unit. In today's world, we use a variety of carbon containing polymers for variety of purposes. Polythene, thermocol, nylon, etc. are all what? Carbon containing polymers. So if an example comes, like give an example of polymer, so you can give the names polythene, thermocol, nylon. The large size and their shapes are the most important properties. So their large size and their properties, that they are durable, right? They cannot be broken down. So this unique feature makes them very, very everlasting material, and that is why they are used for different purposes. Depending upon the need, one can choose a polymer which suits best for specific purpose. Like depending upon our choice, polythene, PVC, Teflon, we can use different versions also. But actually polymer and plastics are not synonymous. You have to keep in mind, polymer means what? It's a special compound of organic compounds which has a long unit chains, and it is not polythene. Polythene is what? Polythene is a type of polymer, and whose polymer it is? Of ethene. Plastics are special type of polymer. In your course book, you have three type of polymers. One is polythene, another one is Teflon, and the third one is PVC. So now, as you had seen in the polymerization reaction, if you remember that we had discussed earlier, this is what? C2H4 double bond. Yes, it is ethene. So if we take n number of ethene units and under special condition if provided, then it forms the single chain, right? Then it is called as what? Polythene. Poly means many, and from ethene it comes the term ethene, polythene. Clear? So polythene is widely used for food packaging, milk carton lining, making shopping bags. It is used to make squeezable bottles, drums and containers for different purposes. So what is the monomer unit of polythene? If a question comes, what is the monomer unit? So what is this monomer unit? What is the name? Yes, the name is ethene. So what is the monomer unit of polythene? Ethene. And it is used
for your packaging, milk carton linings, shopping bags. High density polythene is used to make dustbin, crater, buckets, this cap, this marker. These are all what? These are all polythene. Polythene is one type of polymer. Clear? Now the second type of polymer which is given in your book is Teflon. Same thing, 2 carbon, double bond. Instead of hydrogen, this is addition reaction of fluorine. Remember? Here, we are substituting hydrogen with what? With fluorine. So we have F2, F2, 2 to 4. So what is the name? 4 means tetra. So tetrafluoroethylene. Tetrafluoroethylene. What is ethylene? The common name for ethene. So this is the monomer unit. Clear? Under polymerization, it will form long chains like this. So what type of question usually comes? Usually the question will come, what do you mean by polymer? Give examples of polymer, or name the monomer unit of polythene, or name the monomer unit of Teflon. And if it's a lengthy question, 3 marks or 2 marks, then they might ask you to write the uses. So what are the uses of Teflon? Most of us know Teflon for its what? Non-stick properties. Yes, the non-stick cookware that we use in our houses has what? Teflon coating. Teflon coating is hydrophobic and possesses fairly high heat resistance. They evenly spread the heat and they are hydrophobic. The water do not stay on it, sticks on it. Teflon is widely used for wiring of aerospace and computer applications also. Teflon is used as an acid resistant insulating material. So these are the 3 uses of Teflon. So make a note of this, and then we will discuss the last one, polyvinyl chloride. So the last one is polyvinyl chloride. What is the monomer unit? CH2 double bond CHCl, chloride. So what is the name given? Polyvinyl chloride. N number of units. Alright, so polyvinyl chloride, the monomer unit. Now the double bond will break and we will get the long chain of this particular monomer unit, right? So what this polyvinyl chloride or PVC, the common term that you hear, PVC pipes, PVC cables, what makes this PVC very unique? Because it is fire resistant. That is why most of the electrical appliances in our households, the computer applications, the cases, right, all the switches, they are mostly made up of what? PVC. Since PVC is highly fire resistant, it is widely used in exterior construction materials such as window profiles, siding boards, or interior housing materials such as wall covering and for flooring purpose also. Fire resistant property, this unique property of PVC is used in wide variety of applications such as electrical cables, the switch cases, the switches, right? Vehicles, household electrical appliances, cable coverings, the insulating tapes, switch boxes, wire coverings, and protecting tubes for power and telecommunication cables. It is used for sewer pipes even and other piping applications. So 3 types of polymers we have discussed. The first one, polythene. What is the monomer unit? Ethene. Second one, Teflon. What is the monomer unit? Carbon tetrafluoride. And the third one, PVC, the monomer unit is your polyvinyl chloride. So here is the uses given on page number 143. Now
What type of questions usually come? 1 marks objective that you have to name the monomer unit, and maybe 2 marks question where you have to write the uses of this polymers. Clear? Okay children, thank you so much.